So Newton's law is a very fundamental topic, and we have learned this topic from our +2, isn't it? Even class 12 से ही हम लोग इस topic को पढ़ रहे हैं. And this is one of the beautiful topic जो कि हम problem करके सीख सकते हैं, isn't it? इसमें कोई बहुत ज्यादा theory की कोई खास गुंजाइश नहीं है. So as you will go for different type of problem, and then you can learn which type of problem have to approach in which method. Okay, so this is one of the very important thing for this particular topic. Okay, so by the way, so what is Newton's law? There are 3 laws, है ना? कितने laws हैं? 3 law हैं. First law क्या कहता है? What is your first law? Anyone? A body is Law in the of state inertia. of rest. Obviously, first law is nothing but what? Law of inertia. Very good. क्या कहता है ये? जरा बताओ. A body is in body the state of continues rest हाँ बताओ. motion rest unless and or until of a unit a force is applied to, a motion. force is given to the body. Very good. External force, isn't it? There must be some external force. So body है वो या तो rest में रहेगा. If it is in rest, it will always remain in rest. If it is moving, then it will again moving. And what is the beautiful part? It will change its state. जिस state में है particle, उस state से change करने के लिए, नए state में ले जाने के लिए, what you need some external forces, isn't it? So first law, अगर आप देखोगे from the mathematical point of view, from the approach of application, then first law will tell you about the state of a system. Means if you know position and momentum, और आप उसके position और momentum change करना चाहते हो, then what you have to do? You have to give some external force. And it will also tell you what is the inertia of this particular mass, or is this particular block, or this particular particle. So what is measurement of inertia here? Mass. Mass. The measurement of inertia is mass. So first is just it will tell you all about the mass of a particle. You have to define the mass of a particle. And if it has greater mass, it is difficult to change its state. And if it is a smaller mass, it is easy to change its state. So inertia will be higher if mass is going to increase. Inertia will be lower when mass is going to decrease. And yes, what we want to change its state. हम इस state के को इस जो भी particle है उसके state को हम change करना चाह रहे हैं. And here one of the very fundamental thing, we assume all these particle as a point particle. कैसा assume करते हैं? As a point particle. And we are just going to discuss only for one-dimensional motion right now. We will also discuss for 2 dimension in first we will learn this thing for 1 dimension, then we will go for a 2 dimension thing. Okay, so first law will, so you have to apply first law. You have to first define what is your state. You know what is your state, and second, and now you have to know what is your mass, and then this is all about your first law. Now let's go for second law. This is very interesting. What is second law? And this is very important also. चलो बताओ, what is second law? Force law. क्या बताता है second law? F is equal to m. Very good. F is equal to ma. Very nice. So second law will tell you F external force is equal to ma, and this can be written in form of vector. Now, it's a very, very important thing. It's a very important thing. Now look at my perspective of watching second law. My perspective of analyzing second law is entirely different. What is this particular thing? I can say this is nothing but cause and effect. This is nothing but cause and effect.
if you have some cause to change the state of a system, and that cause is nothing but the external force, and if there is some external force, and that is one type of cause to the system, you can measure its effect in form of acceleration. Are you getting my point? And acceleration and the inertia of the particle, obviously. So whatever is the cause there, जो भी cause है, आप कभी ऐसा हो सकता है कि कोई particle है वो बिना force दिए हुए move कर जाए? नहीं possible है. So there are some, if you are watching some effect, अगर आप कोई effect measure कर रहे हो, then there is some cause to your system. You have to define some cause to the system. Then only you can see the effect. And we have made and Newton's give a wonderful rule that whatever be the cause, that will be exactly equal to mass into acceleration, and we can measure the basic nature of and we can measure the effect in form of acceleration, and this acceleration is nothing but you can V external by mass of a particle. So this is, for me, is cause and effect. अगर force है, enough force है, obviously friction have entirely different role, but if you are taking the ideal system where there is not any friction, then if there is some external force, then you can measure the thing in form of acceleration. Okay? Unless until body is moving or not moving depends on that particular situation. Okay? So this is your second law, and we will just try to apply this thing. What will be your third law? What will be your third law? Action reaction. Na, batao. Every action has an For equal and every opposite action, there is reaction. an equal and opposite reaction. Very good. So for every action, there is equal and opposite reaction. For every action, there is equal and opposite reaction. This is one of the very interesting thing. So, and one more thing, action and reaction will act on two different bodies. ये बहुत ज़्यादा important है ना? You have, this is very interesting, that action and reaction will act on two different bodies. Different body, please. Different body in opposite direction. So you have action and reaction. और action और reaction क्या होगा? दो different body पे लगेंगे. Suppose I am pushing this particular board, then what will happen? Suppose मैं इस board को push कर रहा हूँ. Suppose I am pushing it, then what will happen? I am pushing to the board, and board will also push to me, isn't it? तो एक्शन अगर बोर्ड के ऊपर हो रहा है तो उसका रिएक्शन कहाँ हो रहा है? मेरे हैंड के ऊपर हो रहा है. Are you getting my point? So if this is the direction of action, then this is the direction of reaction. So if there is some action, you have to, there must be some reaction. You cannot say that action तो हो रहा है लेकिन reaction नहीं हो रहा है. Okay? And obviously it is one for the problem solving thing, you have to always take care that this will act on two different bodies. Okay? यहाँ तक कुछ पूछना है? यस सर. सर बताओ. सर लॉ ऑफ इनर्शिया का एक बेसिक डाउट है सर कि हम मोमेंटम को इनर्शिया भी सर एक फिजिकल क्वांटिटी है. बिल्कुल है. तो सर हम उसे न्यूमेरिकली कैलकुलेट क्यों नहीं कर सकते? मास क्यों नहीं कैलकुलेट कर सकते? मास तो कैलकुलेट करते ही हो सर. मास तो हाँ, मास तो हम कैलकुलेट कर सकते तो वही हैं. तो इनर्शिया और क्या है? मास कैलकुलेट कर रहे हो मतलब पार्टिकल का इनर्शिया कैलकुलेट कर रहे हो.
तो सर यानी कि उसकी यूनिट केजी हो गई इनर्शिया की। सॉर्ट ऑफ मास इज द केजी, जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रोटेशन के लिए जो इनर्शिया है दैट इज द सेम। तो वहां पर तो कैलकुलेट कर लेते हो, क्या वहां पर कभी कोई क्वेश्चन आया है ऐसा? नहीं सर। नहीं, तो यहाँ क्यों आ रहा है क्वेश्चन? यस सर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो मास इज नथिंग बट द मेजरमेंट ऑफ इनर्शिया। तो न्यूटन ने बहुत ही सेंसिबली आपकी चीजों को बताया है। फर्स्ट उन्होंने मास को डिफाइन किया है, भले उसका नाम उन्होंने इनर्शिया दे दिया, बिकॉज ऑब्वियसली इनर्शिया क्या होता है ये जरा बताओ मुझे, थोड़ा सा इस पर बात कर ले। व्हाट इज इनर्शिया? सर मतलब कि स्टेट को चेंज करने में जो भी रेजिस्टेंस टू चेंज, रेजिस्टेंस टू चेंज, यस सर। है ना। हम ऐसा बोलते हैं यार तुम्हारा बहुत ज्यादा इनर्शिया है, कोई भी काम करने में एकदम हालत खराब हो जाती है, इजंट इट? यस सर। दिस इज इनर्शिया, दिस इज सम काइंड ऑफ परसेप्शन। अब मैं तुम्हें एक बहुत बड़ा मास दे रहा हूं और मैं तुम्हें एक छोटा सा मास दे रहा हूं, और मैं तुम्हें कहूंगा कि भाई किसी भी मास को तुम हटाओ, तुम्हें 100 रुपए मिलेंगे। किसको हटाओगे? छोटे मास को। छोटे मास को हटा दोगे। क्यों हटाओगे? क्योंकि तो तुम्हें पता है इसको बहुत आसानी के साथ हटाया जा सकता है। यस सर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। तो दिस परसेप्शन, जो चेंज नहीं होने का परसेप्शन है, दैट कैन बी मेजर्ड विद द मास। तो तुम तो खुद ही बोल दिए ना कि किसमें रेजिस्टेंस ज्यादा है मास स्टेट को चेंज करने के लिए, बड़े वाले मास में या छोटे वाले मास में? बड़े मास में। बड़े वाले मास में। सो उसकी इनर्शिया क्या हो गई? ज्यादा हो गई। ज्यादा हो गया। उसी तरह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? रोटेशन को, रोटेशन के लिए जो रेजिस्टेंस है उसको हम देखते हैं वहां पर, है ना। यस सर। Okay, so this is all about your inertia. Okay, so I think everyone is confident about this. ठीक है? So let's try to, अब ये तो हमारा लॉ हो गया, दिस इज योर लॉ। अब बात ये है कि इस लॉ को हम इंप्लीमेंट कैसे करें, कैलकुलेशन में कैसे लेकर के आए, उसके लिए कुछ तरीके सीखने होंगे। ओके, सो ऑब्वियसली अब सारे लोगों ने इतने तरह के प्रॉब्लम सॉल्व कर रखे हैं कि हम अब नए ढंग से चीजों को नहीं करते हैं। वी विल जस्ट ट्राई टू यूज देयर एक्सपीरियंस और हम उसे आराम से कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है? सो लेट्स ट्राई टू, जब भी आप न्यूटन्स लॉ की बात करोगे तो आपको कुछ डिफरेंट टाइप के फोर्सेस को समझना पड़ेगा कि कौन सा फोर्स क्या करता है और कौन सा फोर्स क्या नहीं करता है। ठीक है? सो मेनली द मोस्ट इंपॉर्टेंट, मेनली आप अगर फोर्स को डिफाइन करोगे, डिवाइड करोगे, देन यू विल डिवाइड इट इनटू टू पार्ट। वन इज पुलिंग फोर्सेस, अनदर इज पुशिंग फोर्सेस, इजंट इट? या तो आप पुल कर सकते हो किसी भी पार्टिकल को, या तो आप पुश कर सकते हो, एंड दिस हैज टू डिफरेंट नेम्ड देयर, और उसके बारे में बात करते हैं। सो लेट्स ट्राई टू गो हाउ टू ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम। So free body diagram, as name suggests, you will keep your body free and then you will just try to find all the forces, and then you will use the equation of constraint, and then finally you can solve the system completely. Now, what is the algorithm? Algorithm kya hoga? So actually what is our final challenge? The final challenge is that you have to make sure that number of equation, so you have to make sure that number of equation must be equal to number of independent variable. अब वेरिएबल कह रहा हूं तो इसका मतलब क्या है? एनी टाइप ऑफ वेरिएबल जो आप यहां पर यूज कर सकते हो। ओके, नंबर ऑफ इक्वेशन, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए आपके पास, तभी जाकर के आप थ्योरी को कंप्लीटली, किसी भी प्रॉब्लम को कंप्लीटली सॉल्व कर सकते हो। सो ओनली न्यूटन्स लॉ इज नॉट एनफ। व्हाट यू नीड one equation from the Newton's law, or this equation, F is equal to ma for all possible body related to the system, plus what you have to write the equation of constraint. Why equation of constraint? Because it will tell you
अबाउट द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, आपको किसके बारे में बात करना है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल. एंड व्हाट इज इक्वेशन ऑफ कंस्ट्रेंट? इक्वेशन ऑफ कंस्ट्रेंट इज नथिंग बट द रिलेशनशिप बिटवीन डायनेमिकल वेरिएबल और रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल. सो दो वेरिएबल एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं, तो उसे हमें इंडिपेंडेंट के लिए दोनों में से किसी एक की जरूरत पड़ेगी अगर हमें सॉल्व करना है पूरे प्रॉब्लम को. तो सो इक्वेशन ऑफ कंस्ट्रेंट विल हेल्प यू to find number of equation is equal to number of independent variable. When you get this particular thing, then you can easily solve the system and you can analyze all particular thing. So let's try to go for, and how you will write f is equal to ma. This will be mainly discussed by FBD. So making FBD plus equation of constraint, a free body diagram. FBD means what? Free body diagram, and going for and plus equation of constraint, then you can solve the problem completely. So let's go for some tricks to make free body diagram. किस तरह से आप free body diagram बनाते हो उसको हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं. This is very simple thing. Okay, आप लोगों ने कर रखा होगा in +2, है ना? सर एफ इक्वल टू एम ए आइडियल बॉडी पे तो नहीं अप्लाई होगा ना? आइडियल बॉडी पर ही अप्लाई होगा और कहाँ अप्लाई होगा? व्हाट डू मीन बाय आइडियल बॉडी? व्हाट डू मीन बाय आइडियल बॉडी? ये तो डिफाइन करो. आइडियल तो अंग्रेजी वर्ड है. मैथमेटिकली क्या समझते हो आइडियल बॉडी का? जिसमें सर फ्रिक्शन ना हो सर. फ्रिक्शन ना हो? ये तो फ्रिक्शन तो रहे या ना रहे उसे बॉडी को क्या लेना देना? इसे कुछ भी लेना देना नहीं है बॉडी को, है ना? पहले आइडियल बॉडी का मतलब बताओ. आइडियल बॉडी करना किसे चाहते हो? जिसमें मतलब फ्रिक्शन ना हो सर. ये आइडियल बॉडी है? नो, ऐसा कुछ भी नहीं है. ठीक है, चलो म्यूट करो अपनी, ये पीछे सॉन्ग की आवाज आ रही है. ओके, सो व्हाट यू विल डू, सपोज फर्स्ट यू विल make all body free. Free का मतलब क्या है? You will just try to, you will make the FBD. You will FBD for all body, making it free. FBD किसके लिए होगा? Body making all body फ्री. आपका काम क्या है? सबसे पहले एफबीडी जब बनाओगे तो सारे बॉडी को फ्री कर दो, एंड यू विल मेक फ्री बॉडी डायग्राम इंडिपेंडेंटली. फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाओगे? इंडिपेंडेंटली बनाओगे. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सपोज मैं कुछ इस तरह का सिस्टम की बात करता हूं. सपोज दिस इज योर वेज, दिस एंगल इज थीटा. सपोज दिस इज योर वेज, देयर इज अनदर one pulley, there is some mass, let's say this mass is m1, and there is rope, and there is another mass m2. So how many bodies there in this particular problem? कितने बॉडी हैं? 2 बॉडी हैं. So what you will do, you will make this body free, you will make this body free, and you will make free body diagram independently for this body, and you will make free body diagram independently for this body. Are you getting my point? So what will happen? So before making free body diagram, you have to choose your independent x-axis for this body and independent x-axis and y-axis for these two body, this second body. So when you will make it free, then where is the chance that this body will go? किस डायरेक्शन में जाएगा? Obviously इसी डायरेक्शन में जाएगा, अगर आप इसको फ्रीली देख रहे हो तो, isn't it? So obviously this will be my x-axis for my first body. So this will be your x-axis. And what will be y-axis? जिस surface पे body move कर रहा है. Suppose it is moving on this surface and it is making angle theta.
So जिस surface पे body move कर रहा है, the body is moving on this particular surface. I assume this is my x-axis. Then perpendicular to that surface is equal to y-axis. Okay. So first task is that you will make your x-axis and you will make your y-axis. ये आपका पहला टास्क होगा. ओके. फॉर एग्जाम्पल सेकेंड पार्टिकल के लिए, सेकेंड पार्टिकल के लिए क्या हो जाएगा? अगर ये मैं फ्री कर दूं, इसे, इसको हटा दूं, तो ये बॉडी किधर मूव करेगा? डाउनवर्ड, है ना? Downward. डाउनवर्ड मूव करेगा. सपोज ये इस पर टच भी कर रहा है, कुछ ऐसा भी है. सो व्हाट इज योर एक्स एक्सिस? सपोज दिस इज योर कंडीशन. सो व्हाट इज योर एक्स एक्सिस? This is your x-axis. Naturally, body will move into this direction. So this is your x-axis. Where will be your y-axis? This will be your y-axis. Okay. Here this is for this body. This is your x-axis. This is your y-axis. Suppose कुछ इस तरह का condition हो जाए. You can have this type of condition also. Suppose this type of condition is there. Then ये वाला क्या हो गया? फर्स्ट वाले का कहानी है. Suppose this is making angle theta. This is third one. And what about this one? इसके लिए x-axis क्या हो जाएगा? You can just make this thing as your x-axis. This is your x-axis, and this will be your y-axis. So first you have to just try to make your body free, and the surface on which it is just going to move, that will be your x-axis, and the perpendicular to that surface is actually what? Your y-axis. Are you getting my point? सबसे पहला काम आपको यही करना है. ठीक है? Nothing to do with its x-axis and its x-axis. Nothing to do, because its name is free body diagram. Please. This is all about free body diagram. Okay. Now, the second task is that you have to give the direction of gravity, because G is the universal constant जो कि आप बात करोगे जिसके बारे में. Okay. So what will be the direction of G? Gravity, mg, weight. This is your first force you have to identify. अगर mass है तो वहां पर gravity का रोल होगा ही होगा, and you have to identify what will be the direction of weight. So this is your first force you have to identify. And what will be direction of G? Is that in the y direction? No, sir. या किस डायरेक्शन में होगा? Always downward. Always downward, always downward, in a vertical direction. Okay, always downward, always downward. Okay. So what you will do, you will take your copy something like that, and if you are just take, अगर आप अपनी कॉपी को वर्टिकल कर देते हो एंड आप अपने चौक को रखते हो, तो चौक कैसे आएगा? ऐसा ही तो आएगा, है ना? यस और नो? Yes, sir. है ना? सो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ योर जी. हिमांशु अपना वीडियो ऑफ कीजिए, है ना? Okay. So this is your direction of G. This is your direction of G. This is your direction of G. So this will be your weight. ये क्या हो जाएगा आपका? Weight. This will be your direction. That will be weight. This will be your direction. That will be weight. mg. Okay. So first force तो आप यहाँ पर इस तरह से देख सकते हो. Now, second force you have to identify as normal force. Second force क्या होगा? Normal force आप identify करोगे. What is normal force? Normal force is that suppose you have some body and some force is pushing towards surface of a particle. अगर कोई force उसे जिस surface से वो attached है उसके ऊपर लग रहा है, then surface will again push that body. वो surface क्या करेगा? उसे push करेगा. Okay, and this pushing force will identified as what? Normal force. When you have something like pushing normal force or reactionary force, इसको आप देखोगे. So now you can see
यहां पर कोई फोर्स सरफेस की तरफ इसे खींच रहा है क्या? सरफेस की तरफ पुश कर रहा है? यस या नो? Yes, Yes, sir. यस कर रहा है। gravitational force. ग्रेविटेशन फोर्स इसे पुश कर रहा है। सो नाउ वेयर इज योर नॉर्मल फोर्स? इन दिस डायरेक्शन। ओके, दैट इज परपेंडिकुलर टू सरफेस। नॉर्मल फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस। जो भी सरफेस टच हो रहा है उसके परपेंडिकुलर होगा। सो दिस विल बी योर नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल्स को हम एन के थ्रू दिखाते हैं। ओके, नाउ यहां पर कोई नॉर्मल फोर्स का बात होगा क्या? टच कर रहा है तो होगा। Yes, sir. Unless until you are not giving some force in this direction. नॉर्मल फोर्स किसी के अगेंस्ट में होगा ना? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? नॉर्मल, अगर कोई फोर्स ऐसा है जो कि इसको इस तरफ पर पुश कर रहा है, सपोज मैं अपनी उंगली से इसे पुश कर रहा हूं, देन इट विल गिव यू नॉर्मल फोर्स। ओके, अगर कोई फोर्स इस फोर्स के अगेंस्ट में कोई जो फोर्स मिल रहा है विद दिस पर्टिकुलर सरफेस, फॉर एवरी एक्शन देयर इज रिएक्शन, तो उस रिएक्शन के कारण जो फोर्स मिल रहा है दैट विल बी योर नॉर्मल फोर्स। इफ यू आर पुशिंग दिस थिंग, जब तक आप इस डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा है, या ऐसे भी फोर्स लग सकता है, डोंट वरी, इस तरह भी आप कोई फोर्स लगा सकते हो, डोंट वरी, यू कैन पुट दिस फोर्स in this direction also, but your normal force will be what? In this direction. If you have some force something like this, then only you have force F. Oh sorry, that force is what? Normal force. So आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि कहां पर वो नॉर्मल फोर्स आएगा और कहां वो नॉर्मल फोर्स नहीं आएगा। You have to some pushing factor to this particular normal force. ठीक है? Now what will be normal? इसमें क्या लगेगा नॉर्मल फोर्स? यस या नो? यस Yes, लगेगा। वेट इसको नीचे खींच रहा है, नीचे खींचने के कारण ये इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है इस सरफेस के ऊपर, एंड व्हेन वेट इज पुलिंग दिस पर्टिकुलर मास डाउनवर्ड, देन दिस particular mass will give some force on this surface, so this surface will also give the some normal force in this direction. Okay, so second thing, you have to identify whether there is some normal force or not. Okay, so let's try to go for a one basic problem for the normal force, then we will go for tension. ठीक है, फिर हम लोग किसके ऊपर बात करेंगे? हाँ बताइए। इसमें सेकंड केस में जो फोर्स आप बोल रहे थे, जब अगर हम फिंगर से फोर्स लगा रहे हैं उस पर, उस केस में वो नॉर्मल फोर्स कैंसिल हो जाएगी फिंगर वाली फोर्स से नॉर्मल फोर्स? नहीं मतलब क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो, फिर से बोलो। सर आपने तो बोला था ना कि फिंगर से अगर हम फोर्स लगा रहे हैं, अभी हम अपने एक एंगल पे लिए फोर्स को, उसकी हाँ जगह किसी भी वहाँ एंगल पे N लगाओ, की किसी भी डायरेक्शन एंगल पे लगाओ, अगर जो बट N की नॉर्मल फोर्स डायरेक्शन इसी है, डायरेक्शन उसके में होगा, opposite- डोंट वरी। हाँ तो अगर हमारी फोर्स वो नॉर्मल फोर्स जो N की डायरेक्शन है, मतलब जो हम फोर्स लगाते हैं वो अपोजिट डायरेक्शन होती है N की, तो वो कैंसिल हो जाता है वो कंपोनेंट N का और F का। नहीं नहीं, आप कहना क्या चाह रहे हो? मैं ये जो फोर्स लगा रहा हूँ, देखो क्या है, जी ये जी फोर्स मैं मास के ऊपर लगा रहा हूँ, ठीक है? यस सर, दैट फोर्स इज F, एंड ये जो सरफेस है इसके ऊपर एक फोर्स लगाएगा, वो नॉर्मल फोर्स है, ठीक है? यस सर, यस सर। अब ये जो डिपेंड आप- करेगा, हाँ सुन लो, मैं तुम्हारी बात जी, समझ रहा हूँ, इसके ऊपर हम एक बहुत ब्यूटीफुल प्रॉब्लम भी करेंगे, ठीक है? ओके सर। अगर ये पूरा पार्टिकल मूव कर रहा है, आर यू गेटिंग माय Yes, sir. पॉइंट? अगर ये किसी तरह मूव कर रहा है, देन ऑब्वियसली इट विल बी डिफरेंट। ओके, लेकिन अगर ये रुका हुआ है, जैसे कि मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूं, हम लोग एक प्रॉब्लम करेंगे, वी हैव सपोज दिस इज अ वॉल, और आप इस वॉल पर फोर्स लगा रहे हो, देन इट इज डिफरेंट स्टोरी। और सपोज करो एक ब्लॉक है और उस ब्लॉक के ऊपर एक छोटा सा मास है, एंड दिस इज योर कैपिटल मास, और फिर आप फोर्स लगा रहे हो, देन यू आर पुटिंग सम फोर्स हियर, एंड दिस विल आल्सो गिव फोर्स, नॉर्मल फोर्स इन दिस डायरेक्शन, बट इट इज नॉट नेसेसरी दिस F इज इक्वल टू N। ओके, यस सर। ठीक है, इट विल डिपेंड ऑन सिचुएशन, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, दैट विल व्हेन आप इक्वेशन ऑफ मोशन सॉल्व करोगे तो आपको पता चलेगा, ठीक है? मतलब कि अगर हम जो इसका मोशन कर रहे थे, अगर वो फोर्स हम पॉइंट मास है, अगर हम अपने फिंगर से स्ट्रेट है हमारी, मतलब नॉर्मल के अपोजिट आप स्ट्रेट भी है, बिल्कुल स्ट्रेट है, आप बिल्कुल भी टच स्ट्रेट है, करके ही हम चल रहे हैं, आप टच करके ही चल रहे हो, लेकिन फिर भी वो सेम नहीं रहेगा ड्यू टू दिस एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन है या नहीं उसके ऊपर डिपेंडेंट होगा, ठीक है?
Are you getting my point? Okay, sir. ठीक है. So आप उस केस में कह रहे हो जब आपका ये पॉइंट मूव नहीं कर रहा है तो ऑब्वियसली जो भी एक दूसरे के डायरेक्शन का फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर देगा. ठीक है. अब उस डायरेक्शन में और कौन कौन सा फोर्स है, that on that basis you have to calculate normal force. Okay. 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 चलो एक सिंपल सा प्रॉब्लम करते हैं नॉर्मल फोर्स को समझने के लिए. ओके, लेट्स ट्राई टू गो फॉर दिस. यहां तक क्लियर है ना? Yes, sir. Now suppose we have a three particle. ये three particle and this is mass. This is frictionless. अभी friction को introduce नहीं कर रहे हैं. Okay. So this is mass m1. This is mass m2. This is mass m3. And we are pushing the some force और m1, m2, m3 की कुछ वैल्यू भी दी हुई है. So m1 is equal to 5 kg, m2 is equal to 3 kg और m3 is equal to 2 kg. And what is this force? ये कब force लगा रहे हो? That force is 20 kg. Okay. Now you have to calculate what will be normal force between m1 and m2. ये इस पर कितना नॉर्मल लगाएगा, ये इस पर कितना लगाएगा. What will be normal और reactionary? Normal force कह रहा हूं या reactionary force कह रहा हूं? Both are same thing. Okay. Now, and I will also tell you that sometime this normal force can be treated as an internal force. So आप उस force को बिना calculate किए भी system को solve कर सकते हो. In general, what will be acceleration of combined system and all this thing? But here is the question is entirely different. Hence, this look at the thing. Hence, this F is pushing to mass m1. Then m1 will push to m2. Yes or no? Yes, sir. Then m2 will also push to m1 Yes, sir. for Yes, action and reaction. And now, if m1 is pushing to m2, then m2 will also pushing to m3. Yes, sir. And m3 will also push to m2. Isn't it? होगा या नहीं? Yes, sir. Okay. So, which type of free body diagram you can plot it? आप free body diagram कैसे लगा सकते हो? You can write this F. इसके ऊपर क्या लग रहा है? F लग रहा है. And this is your M1. And now, M1 is giving the force in this direction. So, M2 इसके ऊपर किस direction में force लगाएगा? In this direction. Let's say this force is N1. Are you getting my point? So normal force will always try to push the particle or reactionary force जिसको भी कहते हो, it will just try to push the particle. ये particle को हमेशा push करने की कोशिश करेगा. Now let's try to go for M2. What will happen to M2? This is your M2. So now if this normal is acting on this one, so this particle is also pushing to M2, isn't it? With what force? N1? N1 in this side? क्या हो रहा है? कुछ डाउट है? Sorry. Okay. Now look at here. So this N1 is pushing it in this side. Now यहां पर मैं F को include नहीं कर रहा हूं. Are you getting my point? Yes. आप समझ रहे हो? यहां पर मैं F को इंक्लूड नहीं कर रहा हूं बिकॉज आई एम मेकिंग फ्री बॉडी डायग्राम. और फ्री बॉडी डायग्राम में इस पार्टिकल के ऊपर जो जो फोर्स लग रहा है मैं सिर्फ उसी की बात कर रहा हूं. इस F का जो इफेक्ट है दैट इफेक्ट विल बी मेजर्ड इन टर्म ऑफ N1 एज वेल एज N2. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये इसके ऊपर लगाएगा N1 तो ये फिर इसे भी पुश करेगा, इजंट इट? और फिर M3 इसे किस डायरेक्शन में पुश करेगा? यू कैन सी इन दिस डायरेक्शन. एंड दैट वैल्यू इज ऑब्वियसली डिफरेंट वैल्यू. दैट वैल्यू इज N2. एंड व्हाट विल बी लास्ट वन? लास्ट के लिए कौन सा आएगा? N2. N2. Okay. So now if you will combine this thing, then you can say
n1 in this direction, n1 in this direction. हो रहा है ना? n1 n1 कंबाइंड सिस्टम को देख रहे हो तो n1 in this direction and n2 in this direction and n2 in this direction, isn't it? Sir. Yes. Yes, sir. So if I am watching the whole system in a combined form, अगर मैं पूरे सिस्टम को combined form में देख रहा हूं, then these forces are acting as a internal forces. अगर मैं एक मास ले लूं और वो मास की वैल्यू मैं m1 प्लस m2 प्लस m3 डाल दूं, देन इस पूरे को डिस्प्लेस करना या इसको डिस्प्लेस करना, बात तो बराबर ही होगी इस फोर्स के लिए. Sir. Yes. Now what will happen? These forces, these normal forces for the combined mass is acting like a internal forces. Are you getting my point? Combined mass के लिए कैसा behave कर रहा है? That is behaving like as a internal forces. So if it is behaving like a internal forces, it will not take participate in a Newton's law for combined mass. Combined mass के लिए ये Newton's law में participate नहीं करेगा. लेकिन if you are talking about the individual particle, if you are talking about the individual particle, this m1, this m2, and for m3, look at this is not a just like internal forces. Internal forces will be just cancel out each other. एक दूसरे को क्या करता है वो? Cancel out करता जाता है. This will be something like interaction force at F12 is equal to minus time F21. So दोनों एक दूसरे को क्या करेगा? Cancel करेगा. So now can I calculate the acceleration of a particle from the Newton's law? What will be acceleration? F is equal to m1 plus m2 plus m3 into a. And what is your value of a? A is equal to 20 by 5 plus 3 plus 2, and that value is equal to 2 meter per second. Sorry, 2 meter per second square, है ना? So this is your acceleration of this particular whole system, and hence if it is moving also x distance, it is also moving with the x distance, it is also moving with the x distance, then obviously acceleration of this one and acceleration of this one and acceleration of this one will also same, and that is equivalent to acceleration of combined body. Then how you will write the equation of motion? कैसे आप लिखोगे equation of motion को? F minus N1 F minus N1 is equal to M1A, isn't it? अब यहां पर हमें A1 लिखना चाहिए था, बट मैंने A क्यों लिखा? सबका एक्सप्रेशन सेम. नहीं, क्योंकि मुझे पता है जितना डिस्टेंस इस फोर्स के कारण ये मूव करेगा उतना ही ये भी मूव करेगा, उतना ही ये भी मूव करेगा, isn't it? And then x double dot will be same. So this is equation of constraint. हमें लिखना ऐसे चाहिए था m1 a1, and then I have to write n1 minus n2 is equal to m2 a2, and then I have to write n3 is equal to m3 a3. But we know that displacement of each particle is same, means x1 is equal to x2 is equal to x3. So x1 double dot is equal to x2 double dot is equal to x3 double dot. So a1 is equal to a2 is equal to a3, and so y, and this can be written as a. That can be calculated, that can be equal to equivalent acceleration of a whole composite system. ये सारी चीजें आपको ट्रिवियल लग रही है बिकॉज ये बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है, बट इफ योर प्रॉब्लम विल बी कॉम्प्लिकेटेड देन ऑब्वियसली यू हैव टू गो विद द स्टेप बाय स्टेप. कहां से पता चला कि ये सारे का एक्सेलरेशन सेम ही होगा? Obviously you have some logic, and this is your mathematical logic, and now you can easily calculate. Obviously this value is equal to f minus n1 is equal to m1a, n1 minus n2 is equal to m2a, and your m3 is equal to m3a. Now what will be value of n3? कितना हो जाएगा? 4.
N3 is equal to 4 unit. What will be value? Sorry, N3, N2 na? This value is just N2, not N3. N2. This value is N2. And now from here, you can calculate N1 is equal to M2A is what? 6 plus 4. That value is equal to 10. 10. You can easily calculate N1 is equal to 10, N2 is equal to 4 unit. Yes, समझ में आ गया किस तरह से काम करेगा? एंड प्लीज यहां भी नॉर्मल फोर्स लगेगा, चूंकि ये वेट इधर लग रहा है M1G, then there is some one another normal force. Let's say this is R1. यहां भी लग रहा है M2G, then this is what? R2. यहां भी वेट लग रहा है M3G, then basically R3. But yes, there is not any motion in this direction. Vertical direction में कोई motion नहीं है. So why we can neglect this thing? इसको लिखने की कोई खास जरूरत नहीं पड़ रही है. But yes, if there is some pushing force, then your surface जिसको आप push कर रहे हो, वो भी आपको क्या करेगा? किसी न किसी तरह से push करेगा, and that can be measured as what? Normal force. So we have talk about the force which is. सर हाँ बताइए. सर यहाँ x1 इज इक्वल टू x2 इज इक्वल टू x3 कहाँ से आया, मतलब कहाँ से आया भाई? मासेस डिफरेंट है, बट ये साथ साथ घूम रहा है, साथ साथ चल रहा है, तभी तो चल पाएगा जब ये होगा. नहीं? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? नो सर नहीं भाई, ये सारे मास एक साथ चल रहे हैं, ये सारा मास एक साथ चल रहा है. एक साथ चलने का मतलब क्या है? जितना ये चलेगा उतना ही ये भी चलेगा, उतना ही ये भी चलेगा ना. हाँ यस यस यस. आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? सो कंपोजिट मास जितना मूव कर रहा है उतना ही तो ये भी मूव कर रहा है, तभी तो एक साथ चल पाएगा. तभी तो हमने इसको कंबाइंड मास के रूप में देखा है. आर यू गेटिंग दिस थिंग? ओके ओके, चलो. सो लेट्स गो फॉर, दिस इज योर normal force. Next we will go for what? Tension force. Okay, let's go for tension. सर अगर इनको करा हुआ एक के ऊपर एक रख दें तो? एक के ऊपर एक भी रख दो तो भी होगा इसी तरह से. क्या प्रॉब्लम है? फोर्स किसी एक पर लगाओ. हाँ, फोर्स किसी एक पर, तुम तो एक के ऊपर एक रखोगे तो फोर्स लगाने की भी जरूरत नहीं है, वेट के कारण ही नॉर्मल फोर्स आने लगेगा. नहीं, तुम्हें फोर्स लगाने की क्या जरूरत है? एक के ऊपर एक रख दो, वेट के कारण नॉर्मल फोर्स लगने लगेगा. यस, आप ट्राई करके देखो, दो पार्टिकल को एज अ होमवर्क ट्राई करके देखो क्या होगा. सपोज कोई मोशन नहीं हो रहा है, फिर भी नॉर्मल फोर्स होगा. दिस इज M1 एंड दिस इज योर M2. ये सरफेस पर है, ठीक है, और कोई फोर्स ऊपर से नहीं लग रहा है, बट ये क्या कर रहा है? इसको पुश कर रहा है, ये इसे पुश कर रहा है. इजंट इट? आर गेटिंग माय पॉइंट? क्यों पुश कर रहा है? वेट्स के कारण पुश कर रहा था. ये इसके ऊपर नॉर्मल लगाएगा, ये इसके ऊपर नॉर्मल लगाएगा. N1 N2 आप इजिली निकाल सकते हो. ठीक है, ठीक है सर. ओके. Now what will happen? Suppose यहां तो हमने पुश किया. Suppose you have same situation and this type of situation in there, and it is attached to a some string, massless string से attached है. Let's say this is M1, let's say this is M2, and again this is your M3. And now in spite of pushing this thing, what you are doing? You are pulling this thing with the same force. इस फोर्स से आप क्या कर रहे हो? पुल कर रहे हो इसे. M और फोर्स की कितनी वैल्यू है? 20 न्यूटन. Okay, the force is 20 Newton and you are just pulling this thing. Now, if you are pulling this thing, then what will happen? This particle will try to move towards right. So hence this particle will try to move towards right. This string will stretch, और string के अंदर क्या डेवलप होगा? There will be a tension.
स्ट्रिंग के अंदर क्या डेवलप होगा? देयर विल बी अ टेंशन, एंड टेंशन विल हैव ऑलवेज पुलिंग इफेक्ट. जितने भी पुलिंग इफेक्ट है उसको आप टेंशन के थ्रू दे सकते हो. ओके, सो नाउ व्हाट वी हैव टू डू, इसकी कितनी मास था? 5 था और क्या था? 3 था एंड 2 था, है ना? यस. So now what we have to do, we have to calculate the tension into this string and we have to calculate the tension into this string. So always try to remember, जिस तरह से आप नॉर्मल फोर्स का काम किया था, नॉर्मल फोर्स का काम था कि यू आर जस्ट गोइंग टू पुश दिस थिंग. दिस इज N1 एंड दिस इज N2. लेट्स गो फॉर M2. M2 के बारे में बात कर रहे हैं. So similarly, the same thing can be done by the pulling of this particular thing, pulling out this thing. So what will happen if you pull this particular particle, then obviously there will be tension in this string as well as tension in this string. And what will happen, this tension will try to pull this particle, in this tension will try to pull this particle. So let's try to go for this thing and just write it, and hence it is going on M3, then answer will be different. So let's try to calculate this particular thing. So again, if 20 Newton is going to pull this thing, what will tension into first one? क्या हो जाएगा टेंशन? M3, या फिर ऐसा कर लो, इसको M1 कर दो, इसको M2 कर दो, इसको M3 कर दो, है ना? M1, M2, M3, जस्ट सेम प्रॉब्लम कर दे रहे हैं, है ना? 5, 3, 2. Let's try to go for this. What will be tension into this thing? इधर तो F लगेगा, ये फोर्स से आप इसे पुल कर रहे हो, F. And what will be direction of tension? Towards left or towards right? Towards right. Huh? It's left. Towards left. Towards right. ये right है, ये left है. Towards left. Towards Left, left. sir. This will be tension T1. Now if you are just try to go for second particle, अगर आप second particle के लिए बात कर, this is M1. This is what? M1. M1 की बात कर रहे हो. So if you are going for the M2, it's a very interesting. What will be tension T1 into M2? क्या हो जाएगा? क्या होगा ये? Towards right. Towards right. Very good. This is your tension. So now look at this tension in this direction T1, and for this particle tension is in this direction T1, because tension will always try to pull the particle. Are you getting my point? Tension क्या करेगा? Particle को हमेशा pull करने की कोशिश करेगा. And why? And you can just see, this is the direction of tension for M2, this T1, for M1, this T1. So this is T1. And what about this one? ये भी तो ये आगे बढ़ेगा, ये इसको टेंशन करेगा. तो what will be this direction? This is direction of T2. And what about M3? M3 के लिए क्या होगा? T2 right. T2 right. And this will be direction of M3. So now you can see. So what will happen? आप टेंशन को जब देख रहे हो, जब दो masses attached हैं, when you have attached, you are just going to attach these two masses. दो masses को आप attached कर रहे हो, and if there is tension, there is tension. So यहाँ क्या टेंशन में अगर कोई बीच वाला एलिमेंट छोटा सा लोगे तो this will tear into this direction, it will tear into this direction, and each and everything will be balanced, and finally there is only one direction will be available there, and there is only one direction will be available there, and so why you can represent tension something like this. ठीक है? Are you getting my point? आपके दिमाग में होगा ना ये कैसे हो रहा है, इससे होने से तो पूरा के पूरा the whole string must be just go into same. Why this tension is there? Because these two are in opposition. Sorry, this tension is acting on this particle, this tension is acting on this particle. If you will talk about the string, then for the string the tension will be in this direction, and for the tension will be in this direction. Are you getting my point? Yes, sir. For the, suppose you are taking the different part of a string, then what will happen? Then tension will be in this direction, tension will be in this direction. So what will happen? Each and everything is going to cancel, and at the last there is tension into this direction because there is block, and at the last there is tension into this direction, and all thing will be going to cancel out. So only the effect of this and this will be there.
Are you getting my point? And again you can see this tension is T2, this tension is T2. Again you can see, if I am watching this composite system, if I am just watching this composite system, these two forces are in same direction, these two forces are in same direction and equal in magnitude. So if I am watching the composite system, these forces can be treated as internal forces. And for the composite system, I can again find F is equal to M1 plus M2 plus M3 into A. And again, I can get A is equal to 2 meter per second square. And from here, we can get the value of tension. So what will be from third one, we can calculate easily. What is M3? 2, isn't it? 2 kg. Sorry, this value is equal to T2 is equal to M3A. Again, A1 is equal to A2 is equal to A3. तीनों का acceleration क्या होगा? Same होगा. So T2 is equal to M2 M3A. What is value of T2? क्या हो जाएगा value? A is 2 unit. So that will be what? 4 Newton. Okay. And what about this one? Second के लिए देख लो क्या हो जाएगा? So T2 minus T1 is equal to M2A. So what is your T2? 4 Newton minus T1. And this value is M2 कितना है? 6 into 2. So सही लिख रहा हूँ ना? T1 minus T2. Sir, T1 minus T1 minus T2. T1 Sorry. minus T1 minus T2. So this value, क्योंकि इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, so you have T1 minus T2 is equal to M2A, and T1 is equal to T2 plus M2A. And what is your T2? 4 Newton. And this is what? 6 Newton. So that value is equal to 10 Newton. So T1 is equal to 10 Newton. T2 is equal to 4 Newton. So you can see there are different type of forces, and the role of these two forces are different. When you are talking about normal forces, the role is what? Pushing the thing. You have to divide the forces always into two parts. When you are just trying to solve the Newton's law, either you can push the particle or you can pull the particle. And after then this thing, there is mainly two more forces. One forces will be frictional force, and second forces will be pseudo force. So tomorrow, just 15 minutes will take about the frictional forces. In the frictional forces, we will just discuss the static friction, then kinetic friction. Kinetic friction is very easy, but we have to learn about the static friction, what is limiting friction, and all about this. And then we will go for little bit of pseudo forces, and then we will try to solve different types of problems. ठीक है? So आज के लिए इतना ही रहने देते हैं. कल हम लोग different types के problems solve करेंगे. ठीक है?